Hi everyone. Good evening. Good evening, guys. Hi everyone, good evening. Who all are available? Let's see today's gainers. It was Gains, Nalco. Does have any news? Guys, let's meet. And today we will be seeing some of the account. We will try to search for some of the stocks, valued stocks.
So yesterday we checked some couple of them, and सही था ये भी. केन्स वाला भी सही है. Next was Nalco. This Hindustan Copper Nalco, they all belongs to the same, like same category. I think this will also good, doing good. It's all time high. I think. Yep. Hmm. So on chart also, Nalco looks good, and so Nalco have also done like it. It have crossed like broken its last peak. So this plus हिंदुस्तान कॉपर ने भी अपना प्रीवियस हाई टच किया है और अच्छा ब्रेकआउट लाइक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है. सो आई थिंक बोथ ऑफ देम विल कीप देयर मोमेंटम फॉर सम मोर टाइम. यस. नाल्को लुक्स इंटरेस्टिंग. इसने ब्रेकआउट and that breakout also it has given it strongly, no? The previous high was near about something 246 and today it has moved to 278, and that is also with a stronger momentum. On average near about volume is 21981. Let's see the like average volume of this stock, how much it is. Let me check one second. एवरेज वॉल्यूम 80 लाख नियर अबाउट रहता है. आज तो नियर अबाउट 2.19 करोड़ है, तो इट्स बेटर, ये अच्छा है. बिकॉज इसका भी चार्ट इफ आई विल सी हियर हिंदुस्तान कॉपर आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर ऑल्सो ब्रोक इट्स ऑल टाइम हाई. सो इधर भी इसका भी ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है. So they will, and that is also by a good. Let's see. Let's feels good. सही किया है. So I think both of them will be having some momentum on Monday as well. मंडे को भी मोमेंटम रहेगा इसमें. Guys, do check. I posted my video today for the profit and loss.
As we check, Nalco looks good. So one is Nalco and Hindustan Copper. And they have given their breakouts recently. और ब्रेकआउट भी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ दिया है. सो नेशनल एल्यूमिनियम, उसका भी सेम चार्ट जैसा लग रहा है जैसे नाल्को का है, और दोनों ही ऑल टाइम हाई क्रॉस किए हैं और विद गुड मोमेंटम. तो वो देख सकते हैं आप. ये दोनों स्टॉक तो कर लिया अपन ने कवर. और कोई सा स्टॉक है? कौन सा स्टॉक? लेट मी पिक समथिंग. ग्लॉटिस का भी रिसेंटली किया था. ग्लॉटिस का वी डिड अ स्क्रीनर एज वेल, राइट? रिसेंटली. लेट मी चेक. लेट मी ओपन screener. I think we recently did a screener. Um, that day, yes. This most valued stocks. So in that also we covered, right? यदि still आपको जानना है ग्लॉटिस का, in that day it came, right? ग्लॉटिस, या ग्लॉटिस is there on the number 3. सो जो वैल्यूड स्टॉक्स निकाले थे अपन ने, तो उसमें ओसवाल पंप्स आए थे, क्रियाज, ग्लॉटिस, एएनबी मेटल्स, शिवश्रित फूड्स एंड एप्टस फार्मा. ग्लॉटिस में अभी कोई लाइक मोमेंटम दिख रहा है, बट नॉट बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़ और एनीथिंग. और बहुत नया कंपनी है जो अपन ने देखा था. उसका फाइनेंशियल डाटा भी नहीं है बहुत ज़्यादा. बट अपना ये तीनों लाइक प्रोमोटर होल्डिंग 70% से ज़्यादा, उसमें एफ आई होल्डिंग भी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी मोर देन 30% था, और सेल्स ऑन ग्रोथ भी है 30. तो इस बेसिस पे अपन ने करा था कि वो, तो आज भी इसका ग्लॉटिस का आज भी देखेंगे अपन. यदि ग्लॉटिस फिर से ओपन करते हैं, सो या ग्लॉटिस हैव स्टार्टेड, but not on the basis of any news or anything. But the intrinsic, when we checked last time, it was a bit impressive somewhere. 60, कितने का है? 60.3 का है. Okay, and here promoter holding is good. Change in promoter, there is nothing like, it's purchase only. उसने like I think public गया होगा, recently listed company है शायद. फिर let's see the financials. Sales, सेल तो इंक्रीज किया 149, 287, 307, 168. एंड लास्ट क्वार्टर इन द मंथ ऑफ सितंबर इट इज 215. Yeah, so it's good. It's been increasing, and like almost, yeah, OPM is something what we have to see. Operating profit margin, uh, इसका 10% से घट के 8% हो गया. 10% से घट के 8% हो गया ये. तो वो देखने का है एक. It's not a drastic change, but yeah, it's like a small company, so maybe. Profit before margin 17, net profit 12, sales is increasing, operating profit is okay. In expenses, what they have? Manufacturing cost, employment cost is under control, other costs are also under control. It's a 1%, it's not too much of manufacturing cost. They would be starting some sales growth, and that's okay. And let's see the FII holdings, because it shows that there are some. So you were right. Like हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि नया कंपनी है, तो वही है. अक्टूबर 2025 एक ही फाइनेंशियल क्वार्टर का रिजल्ट है. तो ऑन फंडामेंटल बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा डाटा है नहीं इसको कुछ और वो करने का, डिसाइड करने का. तो अपन वो देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं कुछ क्वार्टर रिजल्ट का, फिर उसके बाद देख सकते हैं.
लेकिन नाल्को भी सौ, राइट? लेट मी ओपन 1 सेकेंड। इसका पेट्रोस्की स्कोर देखोगे तो इट्स फैबुलस। साफ है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। सी द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम also was very good. Profit growth of 108 CAGR, so it's good with compared to, see अपने peers से भी यदि देखें अपन, इसमें कंपेयर करें, डिविडेंड यील्ड भी होता है इसमें, क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस दैट इज आल्सो देयर, क्वार्टर सेल्स वेरिएंस ज़्यादा नहीं है, दैट इज गुड। ओपीएम इज 46.89%, दैट इज समथिंग। सी ओपीएम, हाउ मच इट दे हैव इंक्रीज्ड, पहले कम था, पहले 12% सितंबर 2023 में, फिर सितंबर 2024 में 38%, अभी 45%। तो बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स इट लुक्स गुड कंपनी। बट डू, आप अपना रिसर्च वसर्च कर लेना इन्वेस्ट करने से, लेकिन बट ये सही लग रही है, मतलब बढ़िया है इसका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 208, 347 एंड 1892, इट इज़ गुड। सेल्स ऑपरेटिंग, other income, profit before tax, net profit, and that is also good. You can keep an eye on Monday for these two stocks which we discussed, एक तो ये नाल्को और एक दूसरा हिंदुस्तान कॉपर। ये दोनों ने ब्रेकआउट दिया है, और आफ्टर लाइक 1 ईयर के बाद, तो अच्छा, मतलब अच्छे मोमेंटम में दिया है। सॉरी। तो चलना चाहिए इसको। Guys, any other stock we want to see? Say hi at least. Good evening. Good evening. Good evening. You guys are silent. आई थिंक ओसवाल का भी हमने कुछ वीडियोस पहले, मतलब आई थिंक लास्ट वीक ही कवर किया था, ओसवाल पंप्स एंड देयर वाज अनदर शक्ति पंप्स। आई थिंक शक्ति पंप्स मेड अ मूव रिसेंटली, आई थिंक बिकॉज वी डिस्कस इन आवर दैट प्रीवियस कॉल ऑल्सो। कॉल में हमने डिस्कस किया था कि शक्ति पंप्स का क्या है, शक्ति पंप और ये सब कंपनियां, वो शक्ति गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। See, recently they got one, so the price has been increased. Yeah, company wise, everything looks good, all literative, it's very attractive, but they are very much dependent on the government projects. And recently, I think they got some project also. See, received 71.25 crore work order from off-grid solar pumps. 6 hour announcement of regulations 1 day, regulation yeah, so 6 hour before another project they got it, so you can keep an eye on Shakti pumps also for Monday। इसका इसको फिर से कुछ ऑर्डर मिल गया है मंडे को शायद। व्हाट हैपेंड, द डॉक्यूमेंट इज नॉट ओपनिंग। Okay, but yeah, yeah, looks like some government project only. Last time what I remember that day when we were seeing, इसको मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, शायद कुछ कुसुम योजना के अंडर, तो ये मूव किया था, तो उसके लिए वो चला था।
तो आज भी है और नया प्रोजेक्ट फिर से मिल गया तो मंडे को यू कैन सी मंडे को भी अच्छा ही चलना चाहिए ये. So third one, I can put it, which you can watch for it. I'm not giving you a buy or sell recommendation, but yeah, you can watch for it. Is Shakti pumps. Okay, only to add on your watch list. Guys, or कोई सा? Or should we return back to? For me today, the most it was Keynes technology. अपना लग रहा है 2 CR वाला जो वो है टारगेट, वी विल बी एबल टू अचीव इट फास्टर. I have rotated couple of stocks from my previous. I found some valued stocks where I have made a recent entry. Some of the profit bookings I did it based on my like 3 weeks before. So a couple of stocks where I was having hold like made a profit of near about 100%. I have sold for like 50% of my stocks. Like some of them were Ujjivan I sold. Another one was Bell. बेल का थोड़ा करके फिर दूसरा वाला कंपनी लिया है. So I've added some couple new stocks into my portfolio. For mutual fund has not refreshed yet. Yeah, it is not. आप लोग कहाँ से हैं कोई? Guys, put in chat if you want to know about anything, so we can discuss. बात करते हैं फिर उसके लिए. If not, also you let me know. Am I audible? मेरी आवाज़ आ रही है? Because I can't see anything in people that only. अरे कोई कंफर्म कर सकता है प्लीज? Let me write it for Monday. Later on, there should not be any confusion. Okay, guys, I'll just take 2 minutes break. I'll be back. Meanwhile, you can post any new stock if you want to know, so we can do the analysis together. यदि कोई सी स्टॉक का चाहिए एनालिसिस तो आप चैट में डाल दीजिएगा. I'll be back in 2 minutes.
I'm back, guys. आज ये तो ऐसा ही हो रहा है सेम जैसे आज मेरे एक फ्रेंड ने एक वीडियो भेजा था। उसमें कोई लाइव था और देर आर लाइक मोर देन 1000 पीपल, दे वर जस्ट सीइंग बट नॉट राइटिंग, कुछ भी लिख नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। द सेशन शुड बी इंटरेक्टिव। आप लोग बस मतलब क्या पोर्टफोलियो देखने के लिए आए तो यू कैन आस्क एनीथिंग, वी कैन डू इट टुगेदर। कोई स्टॉक का एवोल्यूशन और कुछ भी करने का है तो एटलीस्ट लाइक सो आई कैन नो योर प्रेजेंस। Which one is having top allocation? I have top allocation. You will be surprised, but yeah, this is my top allocation. So I have a top allocation into Geofinance. रैट में कैसे कैसे ट्रेड कर रहे हो? रैट, व्हाट इज रैट गाइस? कैन यू एलाबरेट मोर? रैट क्या है, आप बता सकते हो? हेल्प करो मेरे को। राइट में कैसे ट्रेड कर रहे हो? शेफ ही से सीड रैट, गलती से टाइप हो गया, सॉरी अगेन टाइपो। राइट, सॉरी। राइट में कैसे ट्रेड कर रहे हो? नहीं समझ में आया, राइट में क्या है? रात? भाई मैं रात को ट्रेड नहीं कर रहा, ये मेरा जो मॉर्निंग का है तो वही अभी ऑफिस से फ्री होके अभी शेयर कर रहा हूँ। और कोई भी स्टॉक का यदि आपको फंडामेंटल करना है तो अपन वो कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। शेफ पी ही सीट रात, ओके, थैंक यू। अब समझ में आया। नहीं अभी ट्रेडिंग नहीं चल रही, अभी बंद है ये। सो दिस इज माय म्यूचुअल फंड होल्डिंग, को वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है। भाई कैसे स्टार्ट करें सीखना? अरे यार जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर लो, बस टाइम मैटर करता है इसमें। इफ स्टार्ट बाइंग विद सम म्यूचुअल फंड एंड लेटर ऑन व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स, ओके, देन आजकल तो बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है यार। देर आर सो मैनी एआई टूल्स हु कैन टीच यू, और बहुत सारे टूल्स हैं। आजकल तो बहुत सारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी टूल्स करके दे देते हैं। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल, यू शुड नो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट, वो सब जस्ट सीखना पड़ेगा। आप कोई से भी की टर्मोलॉजीज उठाइए, उसको गूगल करिए, उसको समझिए और वहाँ से कर सकते हैं। और बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल भी है मार्केट में और यूट्यूब में एज ए फ्री, तो वो भी आप कर सकते हो। किसी की महंगी कोचिंग लेने से तो अच्छा ही आजकल, अभी रिसेंटली समथिंग सेबी ने किसी पे कौन सा था, फ्रॉम मुंबई, देयर वाज वन अ ट्रेनर, सेबी स्लैप्ड हिम विद सम 600 प्लस करोड़ का फाइन, पेनल्टी लगाया उस पे। और उसने बोला जिन जिन से कोर्स बेचा था और सिखाया था
बिकॉज उनके स्टूडेंट्स आते थे कोचिंग में और दिखाते थे कि इनकी कोचिंग करके और इनका ट्रेनिंग करके मैंने इतना बनाया, और एक्चुअली में जो सेबी ने उनके पोर्टफोलियोज देखे, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वो हैव मेड लॉसेस। ओके, तो ये सब है। तो आप खुद की, मैं तो यही बोलूँगा, खुद से स्टडी करिए, धीरे धीरे करिए, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप समझ जाएंगे। आप, मेरे को लगता है किसी भी ट्रे, ट्रेनर से जो भी सिखाएगा उससे अच्छे से समझ सकते हैं जब आप खुद से करेंगे तो। कार्तिक भट्ट, कैन यू शो यू stock XIR return and journey when you started and how you started? XIR, you can see for my mutual fund, I think it is on the screen, it is 12.77. Okay, and when I started my journey in the year of 2021. Let me show you that. Okay, so I started from there. I think almost for near about 2 years I didn't make any money because I was just learning. Okay, and later on I started making money, and then I did a lot of profit booking uh, from 2024, like, and then again I have started investing heavily because now I see, I think the market have corrected a lot and it's now time for to move up. So you would be seeing that it was flat. I did some profit booking there, and now it is going up because I have invested a lot, and now I'm back in market. I'm trying to learn trading, but the thing is I don't know where to start. Man, open any app, open any, or go to BSC NSC sites, get any company's financial result and start learning from there. Okay, try to read the things what is written. That is the best way you can learn. ओके, कुछ भी ना ग्राफ देखना ना कुछ, आप रीड करो कैसा है क्या है, वो लोग क्या डिस्क्लोजर देते हैं, क्या दिखाते हैं, फाइनेंशियल सीट सब कुछ उसके अंदर है। कंपनी अच्छा है बेकार है, technical, I'm not a technical, like, I can't do a technical analysis of any stock. I don't know also how to do it, but fundamental करता हूँ, और based on fundamental only I used to invest it. For mutual fund, if I want to show you the graph, it is the same. In the year of 2021 I started it. I keep on learning for 2 years, nothing I made it there, and later on I started. I don't withdraw mutual funds, so like it's there. But you would be seeing like from 6 months, I have started investing heavily, near about 20 lakhs, 30 lakhs. I have invested in that. I'm trying to learn. Guys, what's your name? Lee Lee Loch Strike. Lee Loch. So if you want to learn something, there is a very good book which I read it, and I got motivated a lot from there. I think you can start with that. The Intelligent Investor. बेंजामिन ग्राहम का बुक है। आई थिंक यू कैन गेट इट एट चीपर प्राइस इन टू योर लोकल मार्केट। सो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। वो अच्छा बुक है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी, और आई थिंक यू विल गेट लॉट ऑफ मोटिवेशंस एज वेल फ्रॉम देयर। इट्स ऑल, मैंने जितना सीखा है, इट्स ऑल अबाउट द टाइम। सूनर यू स्टार्ट, मोर यू विल मेक। ओके, सो आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स। स्लो रहेगा लेकिन ठीक रहेगा, विद टाइम यू विल रियलाइज द प्रॉफिट।
Actually invested 30K about 1 year ago. Got 60K then by lucky to and copying a friend, then lost 20K. That is basically my path of investing currently. I don't go with any recommendation. Guys, you understand that it's your own hard earned money. आपने खुद कमाया है. ओके. किसी के भी आपका बहुत नज़दीक का कोई बहुत अच्छा भी हो बंदा, लेकिन आप खुद से एक बार आपका स्टडी करके इन्वेस्ट करेंगे ना, देन यू विल बी मोर confident, and it will teach you. If you fail also, it will teach you something. Then you will know that what mistake I did in selecting this stock, and what I have to be like, I have to take care of from the next time. So do it by your own, and then I think it will be very helpful, man, for you, for your learning. That will be best teacher for you. My suggestion, then rest depend on you, man, how you want to take it. लेकिन वो बुक पढ़ लेना, आपको पढ़ना होगा तो बहुत अच्छी बुक है. स्नेहा कुमारी, हाउ मच वुड यू say to invest in stock, bond, mutual fund, FD? Okay, so what's my I do in FD near about 20%. Whatever my emergency fund I require, I just put into that liquid. Okay, and if market is not doing good, sometime I withdraw, as I have shown you also in my investment graph, that I used to withdraw and put in FD. When I see something like nothing is working, the all companies are not doing good, it means that your market will come down. Not in the same quarter but in next quarter. So it gives you a signal कैसा बाकी सारी कंपनी कर रही है ओवरऑल, बड़ी से लेके छोटी कंपनी. यदि बड़े ने सारी बड़ी बेकार की है, तो मतलब आपका अगले क्वार्टर और अगले के अगले क्वार्टर में ज़रूर उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, यदि रिकवर नहीं हुआ तो. सो 2 क्वार्टर यदि थोड़ा गड़बड़ रिजल्ट आ रहा है बड़ी कंपनीज का, सो आई यूज टू विदड्रॉ, आई यूज टू मेक अ प्रॉफिट बुकिंग. जितना भी हो सकता है, जहाँ पे जितना दिखता है मेरे को लेके मैं उसको एफडी में मूव कर देता हूँ. और विद टाइम, if some good corrections comes, like in 2024 I made a mistake at one time, that I withdraw a lot of amount, and then later on I thought like now it is the time to move up. ये जाएगा. और फिर मैंने इन्वेस्ट वापस मार्केट में किया, but that was not my right decision. It went for near about 10 to 12 sessions in positive, and later on it came back down. बट आपको करना है तो, स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टॉक में कम रखिए, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रखिए, और एफडी में तो आपका जितना भी इमरजेंसी फंड आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको कितना क्या आपका बहुत सारी चीज़ें फैक्टर उस पर रहती है. कितने ओल्ड पेरेंट्स हैं, कौन कौन से डिपेंडेंट हैं आपके, किनको क्या ज़रूरत लग सकती है, उनका नियर अबाउट 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके एफडी में रख लीजिए. और सेविंग में तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है. सेविंग से अच्छा तो आप 2 दिन के लिए भी स्टॉक में डाल देंगे, चलेगा वो, मैं बोलूँ. और फिर स्टॉक खरीद सकते हैं. स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टॉक में कम इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा करिए. यदि आप लॉन्ग टर्म है तो या यू देन, जैसे ही मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी, स्टॉक एनालाइज करने आता रहेगा आपको, तो स्टॉक में मूव कर सकते हैं, और फिर म्यूचुअल फंड में कम कर सकते हैं. विथ स्टॉक यू गेट ए लिक्विडिटी, लाइक यू कैन प्ले अराउंड इट क्विकली. म्यूचुअल फंड आपको बेचते नहीं बनेगा, because they are okay, like they will not give as much return as the individual stock, but yeah, they'll keep you satisfied with, and they will definitely beat the FD. I hope I answered your question, Sneha. Praveen Reddy, hi bro. What are your thoughts on Power Finance Corporation PFC? I hold, man. I hold PFC. On paper, it looks absolutely fine. Okay, fundamentally very good. No momentum is coming. That's the problem there. Okay, I was holding a RFC, RECL also, REC, and PFC as well. Last year I made a profit booking, but still I am holding, and I'm in some negative, I think, if I'm not wrong.
I'll be having, yeah, I have PFC. I think how much negative? It's 9.9%. But I'm still holding. I feel it's a good stock. It's not a buy or sell recommendation, but yeah, I'm holding it. And based on my analysis, what I found, it is a good company. Still it is good, it's very lucrative, it's at good पर बट क्या होता है, ये सब कंपनी मूव लगभग 8-10 साल कंसोलिडेट हुआ, फिर उसने 5 to 6 टाइम्स रिटर्न दिया. नाउ मार्केट विल नॉट टेक दैट मच टाइम, मतलब उसको नेक्स्ट उसका ऊपर जाने के लिए 8-10 साल नहीं वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ 1-1.5 साल में हो सकता है कि इट विल मूव अप. और मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो बजट का वेट कर रहा हूँ. आफ्टर बजट ओनली आई विल डिसाइड वेदर आई विल कीप इट और आई विल सेल इट. You got it, Praveen? I'm invested in it. It's the right time. Like for me, it looks like. But yeah, you do your analysis before you buy. But yeah, for me, it looks like with some new news or with some momentum or volume into that stock, it can shoot up. And with some government initiative, a lot of things are coming, data centers or all those things, they will consume energy like hell. There's AI data centers and they require a lot of energy. So presently we have a surplus amount of energy. Okay, but yeah, in future we are going to have a more requirement. And definitely, and their government will try to bring something into the policies so to promote this type of companies. But on paper it looks good and no problem. At least you will be getting some good amount of dividend from that company. Vinod Kumar, guys, please like it. विनोद कुमार, केन्स टेक्नोलॉजी योर एंट्री प्राइस. बोलो भाई. मेरा केन्स टेक्नोलॉजी में आई डिड अ प्रॉफिट बुकिंग, then again I sold it completely. I again re-entered into the market when it was again very attractive to me, so I entered at 4100. मैंने फिर से एंट्री मारी. आई थिंक 3800 पे खरीदा था, लेकिन फिर एक दिन जंप कर गया तो मैंने फिर से और खरीद लिया, बट लेटर ऑन इट केम डाउन. But yeah, this looks good. It's a reasonable price for me based on my studies. You can do your own, but yeah, it looks good to me. Will hold or sell? I can't give you the hold, but for me, it looks good. I'm holding it. Your entry is good, man. I also made such a entry. I think my some of the bank price will be like, I don't buy everything in a single day. I keep on waiting. I do some average out within 3 or 4 days, and the same way I purchased it that. तो आपका तो एंट्री अच्छा है. You can hold it, man. I don't see any problem there. I have 3.75 rupees in my account, which is please, Ragini Upadhyay. No, I don't know what is fruitful. Are you joking or are you serious? I don't know. Is it 3.75 lakhs? Maybe you forgot to write lakhs. कि 3.75 रुपीज ही है. रागिनी उपाध्याय, आप यदि मजाक कर रहे हो तो उसमें मतलब आप जानते हैं कोई आंसर नहीं दे सकता, लेकिन सीरियस है तो आई डोंट थिंक सो यू कैन बाय एनीथिंग. 3.75 crore. Then you can buy anything. You can hire like some PSM for your portfolio manager, PMS. And you can hire them, you can pay them, and वो आपका मैनेज करेगा. आपको मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है खुद से. इतना पैसा रखने के बाद क्या करेंगे इतने पैसे का, क्या कीजिएगा इतने पैसे का, वाले कहानी आपके साथ. तो टारगेट प्राइस टू सेल, I'll hold till above 6,000.
Okay. Anything above 6,000, if I don't see any volume till that the quarter result will come, then I will decide. I can't tell you the target price now. Presently, no technical graph for that. Okay, nothing, no fundamental. It's all on your gut feeling and the financial reports how you read it. Kotak read it some things. Noticed a lot of people have made a good bulk deal as well. So I don't know. I don't understand much of these things why they do and what is the bigger problem there in that. But yeah, for me, it still holds a good value. Yeah, there is a lot of new competition which is coming into the market. Like L&T is introduced with new vertical for EMS, which will give a stronger competition to the Keynes one. But it's still, I think we can hold it, man. By today, I will buy ICCI Bank stock, and also I am as oh great, great man, great Vinod. Good to know. करते रहो इन्वेस्ट. आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी ही आपको बड़ा बना सकती है. करोड़ इज माई ड्रीम फॉरगॉट टू राइट फुल सेंटेंस. अरे यू आर मेकिंग फन ऑफ अस. I know, like maybe you are having more than that, and it's okay. If you dream big, you will make big. So it's good. You're dreaming something big, bigger than mine. Presently, I'm aiming for 2 CR for this financial year to before if this financial year closes. But your is bigger than mine. So best of luck, Ragini. Uh, IPOs nowadays IPOs are coming with very higher valuation. Wait and watch. There are a lot of companies which have like where you can see their balance sheet or other things how they are doing it. I'm not sure like how many shares they are going to. If you know more because you work there, so I think you can invest. But for me, I haven't gone through it, so I don't want to comment something which I don't know, man. I don't want to give you some false information. So I have not read it. I don't know how much like EPS it will come. Okay, if and how many shares they are diluting and what is their net last quarter profit. So I can't calculate the EPS. So I can't calculate their other things as well. So I can't know what the actual value will be. तो आप देख लीजिए और आप खुद से कर सकते हैं आप तो उसी बैंक में. Otherwise, I'll see, or by tomorrow, I'll let you know. If that is okay, Vinod. Is Kings technically worth it for a fresh entry now? Yes, definitely. What I feel. I'm not giving you a buy recommendation because my previous channel gone because of this only. Okay, but I'm not giving you. But I think based on my analysis, it is good. Still, it is valued. Okay, don't get like don't think that something bad will happen. See one quarter. Don't invest lot of amount. Okay, start putting it slowly. Make like 5,000, 5,700 looks good to me. Okay, if something you can buy in bits and pieces or average out, don't buy everything on one day because you don't know. Negative news is there. Lot of mutual fund is have reduced their stakeholdings there. Okay, because of the news, because they want to beat a particular market to show their mutual fund is doing good. So a particular index, sorry. So they will be in pressure, but we are not. If you can hold for a longer time, buy it, man. Luxury time IPO not allotted by return 100% time. Okay. Ankit Joshi, I think I answered right. Ankit Joshi. गैस आप कहाँ से देख रहे हैं ये बता दीजिए कहाँ कहाँ से देख रहे हैं एटलीस्ट योर प्लेस. Joshi, I think north only. What I can think of. Agni Upadhyay, I think north, somewhere north.
Now this is also become like localization thing. We can't predict from where the person will be based on their last name. So if you can just tell, I'm from Hyderabad. Okay, Gujarat. Oh my God, Guju. Guys, you don't need my help, man. I need your help, Ankit. I have couple of friends. My brother lives there. Okay, and there everyone do trading or everyone do invest into share market. The milkman coming to his house also was having a portfolio of near about 20 or 30 lakhs. So in Gujarat, um, man, we have gamblers here. I don't know about gamblers, but spoke to him and he was knowing a lot of things about the market. भाई ये जाएगा ऊपर काय काय छो ऐसे like in their Gujarati they used to tell like ये जाएगा वो जाएगा, and he showed me he was having his portfolio more than 25 or 27. I am talking about near about 3 to 4 years before, man. I don't know presently what's his, but all the money he was like saving was to go to US. That was his dream because his most of the people in his town or village was in US. So बोला मैं तो पैसे करके मैं मोटल खोलेगा मतलब in US. So but he was also doing, so I felt like very much motivated. Like a person, a milkman is investing so much यार, कहाँ से लाते हैं और कैसे करते हैं, but they were doing it. So they do a fabulous job. With some of the other person whom I interacted, they everyone like most of the people whom I interacted, they all were talking about the share market. आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा है मैं. Not to stereotype, but he was Patel. Not sure, man. I don't know his full name, but his name is Madhusudan. I remember still his name, Madhusudan. I have couple of Patel friends and all of them in his village, complete village was is in US. वो मोटल चलाते हैं और पूरा विलेज में वो मोटल में ही काम करते हैं. कोई क्लीनर करता है, कोई बता रहा था कि कोई आयरनिंग में है, कोई फूड में है, कोई कैटरिंग में है, कोई किचन में है. तो मतलब पूरा गांव उसने वहाँ पर बिजनेस मतलब सबको जॉब दे रखा है. एंड सब अपना सेल आउट जो भी करके और सब यूएस जा रहा है. भाई यू आर अप्लाइंग आईपीओस. आई डू. जब कोई अच्छा आता है तो ग्रो मेरे को ठीक लगा था थोड़ा सा. हम्म, क्योंकि लेकिन मैंने लगाया था लेकिन नहीं उसमें हुआ. लास्ट गुड आईपीओ वैल्यूएशन वाइज व्हाट आई सॉ वाज एनएसडीएल. रिसेंट टाइम विच आईपीओ यू गॉट. रिसेंट टाइम में नहीं एलोकेट होता है यार मेरे को. आई ट्राइड NSDL. आई ट्राइड फ्रॉम माई अदर लाइक फ्रेंड्स माई फैमिली अकाउंट्स एज वेल. आई डेंट गेट. अच्छे वाले आईपीओ मिलते कहाँ हैं मेरे को, वही प्रॉब्लम है. सो विथ आईपीओ आई डेंट मेक द बेस्ट आईपीओ इन माई लाइफ वॉज इरिडा. या हाइएस्ट मनी स्टॉक. भाई आई हैव इन्वेस्टेड इन जियो फाइनेंस नियर अबाउट 24 लाख. क्रिएटिव MIIT sorry. My last IPO was LG Electronics. That was good, man. LG Electronics. It is doing good as well. Good, man. Good for you. LG, I applied LG as well. It was on good valuation. Best सिप बताओ.
जो भी पिछले 1 साल से परफॉर्म नहीं किया है उसको पिक कर लो आप। आपको ये मालूम होना चाहिए आपको किस में करना है, बहुत एग्रेसिव में करना है, मिड में करना है, लार्ज में करना है। मैं रेकमेंड करूँगा ये साल लार्ज और मिड का है। ओके, सो बाय समथिंग लार्ज, 200 मोमेंटम या निफ्टी 50। निफ्टी 50 इज हायर, निफ्टी 50 मत जाओ, बट लार्ज कैप ले लो, कोई सा भी, कोई भी उठा लो आप। स्टूडेंट हूँ सर, डोंट कॉल मी सर यार, भाई बोल दो, वो अच्छा है। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। एस आई पी शो करना होना सर, सर्च कर, सर्च करके। ओके, लेट्स सी। I don't do for mutual funds, but yeah, let's do. Let's take mid cap only. Okay, so 3 year return I don't want to see. In last 1 year, whoever have performed better. Okay, mid cap Motiwal Oswal, you can pick it. Okay, the holding is good in this. Some IT, Coforge is good company. Okay, it's having good eternal lot of p, like don't go with the p, by seeing p you will see like why anyone is holding it. But these are such companies which can completely, like, they can expand like anything because they are expanding through the technology. They don't do investments, so they can expand their business like anything. And it's a balanced one. It is having pharma and jewelry, consumables, and financial solutions. BSC is also there. It's a good holding. I think you can go for Motilal Oswal, Motilal Oswal Mid Cap Fund Direct Growth. Urban company stock will fall badly. It's I don't recommend, and I have not analyzed urban company from long time. कैसे हो भाई? बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं एंट्री 147, बट नॉट, आई आई डोंट होल्ड अर्बन कंपनी, सॉरी विनोद। देखा नहीं मैंने। आपको मैं कल देख के बता सकता हूँ, आई टेक अ नोट ऑफ इट, अर्बन कंपनी का। Before IPO they will show as profitable. But yeah, these are very small margin business. If they will increase the service provider, they will find it, people will find it in their nearby place only, some local markets. So they can't play bigger, like with big margins there. सबके पास सब कुछ है, इलेक्ट्रिशियन हर जगह मिल जाता है आजकल। ऐसा नहीं है कि उन्हीं से सर्विस लेना पड़ेगा। या in metros or other places, yeah, I do understand, but in tier 2 cities, still it's a small ticket type of business. But yeah, with more the number of orders, yeah, they can make a difference. But yeah, I don't think so something good will happen. Stock name Ori Grow India. Let's check Ori Grow India. अच्छा, यही है ना, इसी की बात कर रहे हैं राइट आप? क्रिएटिव MIITT।
राइट, आप इसी की बात कर रहे हो ना, और ग्रो इंडिया दिस वन। अरे, पेनी स्टॉक है भाई, आप 1 रुपये मत लगाओ। ठीक है, आई विल नॉट रिकमेंड, आई विल नॉट डू एनालिसिस ऑल्सो ऑफ दिस स्टॉक। इट्स अ पेनी स्टॉक। कितना है प्रमोटर होल्डिंग, क्या कर रहा है इसमें? ये भाई प्रमोटर तो है ही नहीं इसमें। कहाँ है प्रमोटर? प्रमोटर ही नहीं है इसमें। सब रिटेल के पास है, क्यों खरीदना? आपको 1 रुपये नहीं लगाना भाई। क्रिएटिव आईटीटी, ये भाई रिक्वेस्ट है आपसे। आप अपना किसी का था ना 3.17 रुपीज़, मैं भूल गया, चैट में किसी ने डाला था मेरे पास 3.17 रुपीज़ या 71 रुपीज़ ऐसा कुछ है। 3.75 रुपीज़। मैं बोलूँ आप आपके 3.75 रुपीज़ भी हो तो आप वो भी मत लगाना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। दूर रहिए ऐसे स्टॉक से। वेट, लेट मी डू अर्बन कंपनी। लेट मी ओपन इन माई लैपटॉप। अर्बन कंपनी में देखने में मेरे को जितना मैंने रीड किया उसमें एक ही चीज़ समझ में आया, ये जो इसका यूएई और सिंगापुर अब्रॉड बिजनेस चालू करने जा रहा है, इन दैट दे कैन अर्न अ गुड अमाउंट। क्यों बाहर एक्सपेंड कर रहे हैं? यहाँ पे प्रॉफिट, वही मैं बोल रहा हूँ ना, टिकट आप साइज देखोगे बहुत छोटा है यार। और रिटेंशन के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना वो अपना एम्प्लॉय रिटेंशन इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब आपको कुछ भी महीने देखो आप कि इनका यूएई सिंगापुर और इन सब में जो चालू कर रहे हैं वो कैसा रिस्पांस दे रहे हैं। ओके, एंड उसका एबिटा कैसा आ रहा है, फिर आप वो एनालाइज करके तभी इन्वेस्ट करिए। आप इतना बड़ा 10,000 कितना बता रहे हैं, आप शेयर खरीदना चाहते हैं, आप उसको खरीदने से पहले एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। बट अभी तक तो मेरे को उसमें कुछ ऐसा पॉजिटिव दिख नहीं रहा है यार, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैं आपको बोलूँ। हाँ देखिए, आईटी कंपनी है, इन सब सर्विसेज में पेनिट्रेशन उन लोगों का अभी सर्विसेज, इस सब सर्विसेज में 2% है, लेकिन मैंने बोला ना, ये गली गली में मार्केट में लोग हैं, और उनको रिटेन करने के लिए आज एक इलेक्ट्रिशियन है, कल दूसरे से टेंडर करेंगे, वो छोड़ के चला जाएगा। उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी कॉस्टिंग पड़ रही है ये सब चीज़ों में। लीगल वर्क, पेपर वर्क, ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर योर एक्सपेंसेस ओनली, सो एक्सपेंसेस आर हाई। इंडिया में उतना ज़्यादा, आप वो 500 कर देगा, आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाओगे ही नहीं भाई। आपको एक छोटा सा कुछ लाइटिंग का करवाना है तो टिकट साइज जब तो बड़ा नहीं होगा, बड़ा जब होगा मेट्रो सिटी में होगा, यदि बड़ी चीज़ें कुछ करने लगे, सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगे, तब होगा। इसीलिए वो अपना एबिटा पॉजिटिव करने के लिए ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ पे इन सब सर्विसेज का ज़्यादा पैसा मिलता हो, तो इसीलिए वो यूएई सिंगापुर और इनमें जा रहे हैं, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी शो कर सके, which will take time for me guys, frankly speaking. So I don't recommend you presently, but yeah, you can do your own analysis, but for me, if I have to invest, I will wait for some more time to see how they are doing into UAE and Singapore.
क्रिएटिव एम आई, क्या हुआ भाई, आप इतना खुश हो गए? अच्छा, आप वही हो? सॉरी। और ही ग्रो इंडिया भाई, दूर रहो, भगवान जाने कौन बताता है आप लोगों को ऐसे ऐसे स्टॉक। प्रमोटर ही नहीं है, कहाँ किस कौन कंपनी रन कर रहा है भगवान जाने। दिखने में छोटा लगता है, पॉइंट सैमसंग आपको लग रहा होगा मैं 10 लाख शेयर खरीद लूँ, हाँ, या 10,000 शेयर खरीद लूँ और फिर वो 10 लाख का हो जाएगा, फिर मैं करोड़ों में हो जाऊंगा, ये सब आपको। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में मत करो भाई, मैं बताऊं, उससे दूर रहो। और ये, और इन सब से पता नहीं कौन सा पेनी है, पेनी से भी पेनी है। सबसे बुरी बात है, प्रमोटर है ही नहीं यार, कौन चला रहा है? सब तो बेच के। इट्स गुड। आई डिड 2 days before for Sand. It looks good presently to me. I am waiting for this quarter result. On the basis of this quarter result, I decide. Last year, when the management got changed, after that, a lot of things were happening for that company. Sorry. Uh, so last year, when the management got changed, a lot of things were happening for that company. Things didn't goes well there. But the thing is now, things are improving. It was stable for a couple of quarters. Now some growth we can see. So let's wait for one more quarter, and by next month you will know how they are performing it. So after that you can decide it. But on fundamentally it looks good. एक बार आपको पोर्टफोलियो स्क्रॉल करो भाई, एक सेकेंड। Don't buy, okay guys, my buying price will be totally different। आप देखिए उजलॉन, मैंने 2 बार 3 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ उसमें। मेरा 17 18 या 20 रुपए की खरीद है वो। अभी भी मेरा एवरेज होल्ड करने पे भी अभी 34 है, इतने बार बेचने पे भी। तो डोंट बाय, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी कितना चल रहा हो आप एक बार देख लेना, पूछ लेना, फिर खरीदना, कॉल करके दिखा दो। एक बार आपका ओके, सेजिलिटी गुड। अभी 2 सेशन पहले, 3 सेशन पहले आई थिंक वी डिड फॉर सेजिलिटी। इट लुक्स गुड, इट इज टेक्निकल फंडामेंटल, इट इज लुकिंग गुड। व्हाट्स योर थॉट ऑन इंडियन? Sorry. For Sagility, I think I was on mute. For Sagility, we did it couple of days before, guys. आप जाके देख सकते हैं, फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत दोनों अच्छा था उसका। तो इफ़ यू आर होल्डिंग, आप देख सकते हैं उसको, लेकिन मेरे को तो अच्छा लग रहा है दोनों। व्हाट्स योर थॉट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट आउटलुक? ऑल डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो इट इज़ डूइंग गुड। विद कंपेयर टू अदर कंट्रीज देखें तो इट इज़ डूइंग गुड। Next year it will be positive because of the free trade agreement with the European nations and a lot of other countries also what we are doing it। ओके, तो नेक्स्ट ईयर जैसे यूके का हो जाएगा 2000, अच्छा, अप्रैल से चालू हो जाएगा, तो वहाँ से फिर चीज़ें इम्प्रूव होती दिखेंगी आपको। मेरे को लगता है अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा और अब सही रहेगा। तो मैंने अपना आपको इन्वेस्टमेंट ग्राफ भी दिखाया था, मैंने बीच में बिल्कुल बंद कर दिया था। नाउ आई एम बैक, लाइक आई एम इन्वेस्टिंग, एंड like I'm not sitting on any cash presently। I've invested complete amount in stocks। I'm positive, it looks positive to me।
टाइटन इंटेक पेनी स्टॉक बाय किया आपने? नहीं भाई, मैं पेनी स्टॉक, मेरे को कोई चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती तभी जाता हूँ मैं उनमें। मोस्टशिप, मोस्टशिप, मोस्टशिप भी किया था अभी। इट वॉज ओके, नॉट गुड, नॉट टू बैड। लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट। दो तीन प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंट था। अभी इनका एक नया एक ईसीबी बोर्ड था, उसका भी, लेकिन उसकी भी कंप्लेंट्स आ रही है, तो थोड़ा इम्पैक्ट ले लिया है उसने। अपने ऑल टाइम हाई को टच करके भी नीचे गिरा है, तो थोड़ा उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना क्वालिटी। जो इश्यूज बहुत सारे उसके कस्टमर यूज वो कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं उसको लेके। बाकी ठीक ही है, देर आर मच बेटर कंपनीज देन दैट। रतन इंडिया पावर सबका फेवरेट था लास्ट ईयर तक। मैंने अभी तो नहीं किया, लेकिन मैं नोट कर लेता हूँ, कल मैं इसका कर लूँगा, रतन पावर इंडिया का। आपको मैं कल करके बताता हूँ। कैन यू क्लिक ऑन पोर्टफोलियो एनालिसिस? दिस वन। मेरा पोर्टफोलियो एक्स आई आर इज 15.38। सो यू कैन सी इन 2024 आई वॉज साइलेंट। पूरा मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। अभी मैंने 3 मंथ से मोटा किया है। व्हाट यू वांट टू सी? पीएनएल की एलोकेशन मेरा लार्ज कैप में ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा लार्ज कैप, मिड कैप, फिर देन स्मॉल कैप। ऑलवेज कीप नियर अबाउट 40% ऑफ माई मनी, मोर देन 40% ऑफ अमाउंट। एंड फिर लार्ज कैप को बैलेंस करने के लिए फिर स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, फिर मिड कैप। फील द म्यूजिक। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? विनोद 12 रुपीज़ में बाय किया, नाउ इट्स 9 रुपीज़ चेंज। अरे भाई, पता नहीं, इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, आप क्यों जाते हो? क्या करना है आपको उसमें लेके? बहुत सारे वैल्यूड स्टॉक्स हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप सोचते हैं पैनी लेके आप कुछ बड़ा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मृदुला द्विवेदी, हाय। हाय। भाई अपने आईसीसी एएमसी आईपीओ अप्लाइंग और अवॉइडिंग। भाई मैंने बताया ना, मैंने उसका देखा नहीं है यार, मेरे को उसको मालूम नहीं है लास्ट प्रॉफिट कितना था, तो मैं ईपीएस नहीं कैलकुलेट कर पाऊँगा। मेरे को अपना देखना पड़ेगा उसको, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने अभी तक उसको एनालाइज नहीं किया है, और अभी मैं आईपीओ से थोड़ा दूर रह रहा हूँ। अभी पता नहीं क्या हुआ है, आईपीओ में सब ओवर वैल्यूड आ रहे हैं, कोई ढंग का प्राइस आएगा। आई एम वेटिंग फॉर सम गुड आईपीओज, एनएससी। I'll wait for it. I'll have some money. If I don't see also, I'll try to see like वो सब मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट सही रेट पे लेके आएगी। और जियो का थोड़ा ओवर वैल्यूड आएगा अपने कंपनी नाम, अपने ब्रांड के कारण, लेकिन हाँ, आई सी लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर विथ डाटा सेंटर,
with the tie up what they are doing it with Google, Facebook. Uh, it will be interesting to see how they grow. अरे आज कोई एक SME IPO आया है, 20% डिस्काउंट पे खुला है, कोई IT कंपनी है. आई डोंट बाय गाइज प्लीज़. IPO से पहले बस IPO वो मत देखो कितना सब्सक्राइब हो रहा है, ये सब बड़े लोगों का गेम चल रहा है. सो कैलकुलेट सी विच इज़ मोर फेवरेबल टू यू. क्या है उसका, कैसे एक्सपेंशन प्लान है, कैसे किया है उसने, बेस्ड ऑन दैट ओनली यू बाय. विनोद भाई आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, कुछ ज़्यादा ही ले रहे हो. मेरे को लगता है आप बहुत ज़्यादा रिस्की गेम खेल रहे हैं. Coolgate, let me check Coolgate. Just 1 second. कोलगेट का मेरे को एक चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है, बस रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी. 5 ईयर CAGR देखो बहुत कम है. शायद कंपटीशन कर रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं. बाकी सब तो अच्छा दिख रहा है, बट या आई थिंक उसके कंपैरिजन में डाबर और ये सब पतंजलि ठीक दिख रहे हैं मेरे को. इसका PE भी बहुत ज़्यादा है. I don't recommend to buy as per me. Okay, you do your analysis, but on seeing, I don't recommend. It's not like, I don't think so. It's good, or you will make some money in a shorter time. Yeah, some थोड़ा और वेट कर लीजिए, लेकिन उससे अच्छे मेरे को डाबर और पतंजलि दिख रहे हैं यदि कंपेयर कर रहा हूँ तो. आप उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है. देख लेना, आप खुद का रिसर्च कर लेना. मैं बेस्ड ऑन द डाटा सेल्स फिगर बता रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ देख के बता रहा हूँ. पहले कंपटीशन नहीं हुआ करता था, अब ये सब भी आ रहा है मार्केट में. पहले उनके बहुत सारे खुद के लाइक मोनोपोली थी उनके प्रोडक्ट्स की, बट अब ये एंट्री इनकी इनकी सेल्स ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है विद कंपेयर टू देयर. इफ़ यू सी द CAGR. मेरा 1 लाख लॉस में भाई मेरे विनोद भाई काय को रिस्क ले रहे हो फिर इतना, मतलब. डोंट टेक सो मच रिस्क मैन, प्लीज़. आप अच्छी कंपनी लेके बैठो, थोड़ा सा आराम से बैठो, टेंशन मत लो. जल्दी से नहीं पैसा बनाने का, अपने को धीरे धीरे करके पैसा बनाना है. वो लंबा टाइम टेकेगा. जल्दी से बनाया हुआ जल्दी चला भी जा सकता है आपके साथ. 1 man back it will good nowadays it turns red.
And nowadays market is very fluctuating. Nothing is like nobody is able to predict it. It's I don't know news until unless this trade agreement will be signed, it will remain like this. Let's see what happened in Quad meeting. Trump will come. He also wants an ally in Asia. So let's see, and things will be better. I think coming months. जगन्नाथ भाविकते बीएससी अरे बीएससी मेरे को अच्छा लगता है आई एम होल्डिंग बीएससी आई होल्ड इट आई डिड दो बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ बट अभी भी बहुत दम है मेरे को लगता है उसके अंदर आई होल्ड बीएससी मेरे पास अभी भी है लगभग 150 शेयर होंगे हाँ 196 है इंक्लूड एन एस डी एल एंड सी डी एल ऑल्सो गॉट आया भाई जीओटी आया ऑल्सो क्या है ऑल्सो गॉट आया भाई मेरा मेरा नहीं समझ में आया मेरे को भाई विनोद भाई इंक्लूड एन एस डी एल एंड सी डी एस एल ऑल्सो गिर गया भाई मेरा अरे यू कैन होल्ड एन एस डी एल और दिस शेयर्स यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम लेट्स सी now what happened into the eighth pay scale. Okay, when this big institution will come back, when the rupees थोड़ा स्ट्रांग होगा विद कंपेयर टू डॉलर. आप देखो तो ये सब प्रॉफिट बनाएंगे. इन सब के हाथ में है ये सब विथ न्यू रूल ऑफ पैन 2.0 ये सब एनएसडीएल चलेगा मेरे हिसाब से तो चलेगा. आप देख लीजिएगा मैंने मेरा एनएसडीएल में होल्डिंग है. मैं भी मेरा आपको दिखाता हूँ मैं भी लॉस में हूँ उसमें लेकिन बट आई एम होल्डिंग अ गुड अमाउंट देयर. मेरा भी गिरा है. आप गिरने से मत डरिए. गिरेंगे तभी सही रहेगा. सब ऊपर ऊपर भागते रहता है तब मेरे को बहुत डर लगता है. जब गिरता है तो आई एम रिलैक्स्ड. मेरे को लगता है चलो ठीक है अच्छा है. भागेगा तो डर लगता है मेरे को. ज़्यादा भागता हुआ स्टॉक अच्छा नहीं लगता. गाइस प्लीज़ लाइक इट. लगभग मोर देन 200-400 पीपल व्यूड बट ओनली 5 लाइक्स. क्या बात है. एक डबल टैप करना रहता है बस इतना ही है. Hey, today near about 500 people new people join. Yeah, variance is showing us 500. Please like it guys. Like and subscribe if you want to have more discussion, if you like the discussion. Hi bro, what are your thoughts on Container Corporation of India? I did some days before. Praveen, alright. I think we spoke Praveen on this. Let me open, but I made some note about Container Corporation of India some days before. Let me just check 1 second my notes. I have in my notes I wrote it is good, like it looks good, and government is going to like announce something. Looks like I have mentioned like in my notes to follow up after 3 weeks, and some meeting is going to happen, and I think it will be good.
And the CAGR, other things also looks good. The price P ratio, it's not very much overvalued. It's not, it's good. I think you can hold it if you're holding. If you want to buy, do your own research and buy. But yeah, for me, it looks good. That I can tell. What's your Monday market expectation? It will be good. What I feel. Let's see today how gift gift Nifty is done. I think it will be okay. Sideways or it will be good. I feel. Mira like that. Sorry, I'm not. No problem, man. Just I want people. So at least I'll feel encouraged whether you're liking, because a lot of people, like more than 500 people have visited and joined live and only 9 likes. So what we need to improve it, we have to see from that, right? आकाश पुरी, भाई रुपीज स्ट्रांग कैसे होगा? बट ब्रो, जब तक बीजेपी है तब तक कुछ नहीं हो सकता इंडिया का। क्रॉनिक कैपिटलाइजेशन शॉर्ट टर्म में अच्छा होता है बट लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट सस्टेनेबल, याद रखना। ओके सर। रुपीस कैसे स्ट्रांग होगा? जैसे ही ट्रेड डील साइन होगा, डॉलर्स विल फ्लोट, रुपीस थोड़ा स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा। यूएस इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन बबल। Lot of things are not on a microeconomic side. If you'll see, it is not good. Whatever the amount of the debt what the country have, near about in trillions, okay, it's not good for them. So क्यों इतना बढ़ के रखा है? Because of some small factors. Now BRICS is going to have their own currency, which they recently introduced as a unit, okay, a cryptocurrency. So all BRICS nation is going to use that. So dollar deal dollar will come down in that case as well. And as soon as the trade will start, you will see the significant improvement into dollar. If dollar will improve, the FIL will come back. So I can't comment on some political views as per guidelines, but yeah, uh, I don't blame any government for it, and it can happen with anyone. Whatever the country is doing, I think it's doing good. Gains technology कैसा होगा? We discuss in technology at the beginning of this live session. We discuss Vimal Lab. Then you can book the profit. You purchase at 3,800 something, right, Vinod? Then you can see, always book profit, guys. I can't comment, Akash Puri, on that. I'm not entitled to comment on those things. So whether whatever the government is doing, I'm not the right person to comment on it. Thanks, man. Thanks, Akash. You can hold it. It have a good future, Mimla. You can hold it. At least these all uncertainties will be there for near about 1.5 to 2 years. I think you can hold it for a longer time. You can review it after 6 months, but till 6 months it looks good. Yeah, you will make it profit. That is good. You're on right path. You can hold it for a longer time, as per me. You do your analysis, but yeah, it's good. I have in my another portfolio.
I mostly like after finishing my office like shut down at near about 10, and by 10:30 we start. It's not like something I do like it's like two-way interaction. What we do, we discuss lot of things, not only stocks. We discussed on a lot of things. So yeah, 10:30 till on weekends it will be long, but mostly it will be like 10:30 to 11:30 or 12 maximum. I try like if there is no much work in office, I try to like come every day. But if it is like more workload there, sometime I skip as well. But I keep posting. I had another channel which got a strikeout because of the YouTube policy, so I made a new one, and I'm sharing my journey of making 2 CR by 2026 financial year, means by this coming March. It's an aggressive one, but yeah, I'm trying to do it. Let's see. I'm like I did in my previous channel with 1 CR. I was late there as well for near about 3 to 4 months. I am expecting the same thing, that my 2 CR target what I made, I'll be not able to achieve by March, but let's see. I am hopeful I can do it. But yeah, if not March, in 2026 by May, definitely I'm going to achieve that. And just I want you people to witness it, get motivated. Don't get into that false FNO and other other things, and keep investing for a longer time, which is the best thing what I feel. What is the name of what my channel? This time I made it with the Money Mind V. Earlier it was the Money Mind only. You can hold, Vinod. It's going to give you something good. What I feel. कल किया था हमने ये विनोद. कल नहीं, मंडे को किया था. अच्छा है. आप कर सकते हो, देख सकते हो. Guys, please like and subscribe, so we can connect again. Sumit Kumar Parida. I think we met Sumit right before in morning session or somewhere. Reliance Power is good to hold for a longer time. A lot of power problems are going on, ma'am. I don't want to comment on that. Lot of power problem with this person, Anil Ambani. ED is attaching a lot of things. Don't know what will happen. Buy something good where it is clean, safe, management is doing good. Lot of things, lot of options. There are like thousands of stocks are there, ma'am. Why you want to go for? Because it looks cheaper. There are a lot of other stocks also. And don't go for cheaper. Like if you have 2000, buy one share, but of a good company. Fortis was okay, not too good. No momentum. I am seeing it presently. We did it a couple of days before for Fortis as well. भाई व्हाट्स योर ओपिनियन? गवर्नमेंट बेस्ड है पूरा आईआरएफसी, बहुत दिन से नहीं चला रेलवे. गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो लास्ट की ईयर का बजट बिकॉज ऑफ इलेक्शन कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ. मिक्स जॉइंट सरकार थी. दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग टू कम फॉर रेलवे, बिकॉज फ्रेट is going to contribute a lot, and that need to increase a lot to increase the manufacturing capability of India. Now they are expanding to different cities. So if they want to have something good, they want to invest into the railways a lot. So I feel like whatever the correction was there, it already happened. Now something good should come. Just wait and watch for the election. If you want to gain something good, buy something before the election. ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन पहले मतलब
आपको वॉल्यूम देख के मालूम चलने लगेगा कि कुछ गवर्नमेंट से आने वाला है कि नहीं। सो एनालाइज द वॉल्यूम बिफोर द इलेक्शन। 10 दिन का पुराना वॉल्यूम उठा के देखना। पीपल हैव लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन मार्केट। आई डोंट नो हाउ दे स्निफ इफ समथिंग इज गोइंग टू कम फॉर द रिस्पेक्टिव कंपनी और नॉट। 10 दिन पहले का वॉल्यूम उठा के देखना, यदि कुछ ऊपर नीचे आता दिखे आपको ज़्यादा बढ़ रहा है, सो यू ऑल्सो गो एंड बाय इट। विनोद, विनोद कितने स्टॉक खरीद रखे हैं आप? तो सारे स्टॉक नहीं क्या है ना। अरे इतना कम है, एक तो 117 ही है, इतना डरते इतना नहीं है, आप टेंशन मत लिया करो। वेट, जस्ट आप वेट करिए, देखिए। सर यू डिडंट चेक माय मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, सॉरी मैन। आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम ऑफिस। आई रिमेंबर नाउ यू सुमित। आई रिमेंबर नाउ यू, सॉरी मैन। You met me in morning, yes. Right, right, right. Sorry for that. After office I had my dinner and came online. I'll check and reply you back as soon as I'll get time. Not today, but by tomorrow I'll do it, man. IS aspirant कौन है? गार्डन रीच इज गुड। बहुत सारा नया रशिया के साथ भी टाइप कर रहे हैं। गार्डन रीच भी कुछ दिन पहले देखा था। इट इज़ ऑन हायर वैल्यू, बट सब कंपनी ऐसा ही है। इट्स ओके ओके टाइप ऑफ कंपनी। There are some couple of other stocks which are good if you want to invest in the same sector. Search for some other like competitors of it. They are in better position than this. जगन्नाथ अपोलो माइक्रो सिस्टम। अरे अपोलो माइक्रो सिस्टम बहुत रैली दे दिया अभी तो नीचे, आज शायद 4-5% वापस गया है। इट इज़ डूइंग गुड। इनोवेटिव स्मॉल कंपनी, दे कैन रिसाइज इट, दे कैन एक्सपैंड इट वेल। फंडिंग इशू रहता है, प्रोजेक्ट पे बेसिस है। प्रोजेक्ट अभी मिलते जा रहे हैं, थोड़ा डाउन हुआ तो नीचे आ जाएगा। वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हो आप, देख लो, आप खरीद सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए तो वैल्यूएशन लाइक पी इज़ वेरी हाई। ओके, जब करेक्ट होने पे आएगा तो भाग नहीं पाएंगे अपन वहाँ से, लेकिन अभी तो अच्छा कर रहा है। अभी रिसेंटली दे गॉट सम प्रोजेक्ट एज वेल। लेकिन फंडामेंटल देखूँ तो नहीं खरीदूंगा मैं उस स्टॉक को। बट आप देखो तो बाकी सब चीज़ें जिस हिसाब से चल रहा है इंडस्ट्री, देर आर कपल ऑफ अदर स्टॉक्स विच आर वेरी गुड इन द सेम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, जो भागे ही नहीं है। इतना बड़ा ऑर्डर बुक है कि कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं। कि इंडियन गवर्नमेंट इज हायरिंग बिग बिग एमएनसी, बीसीएस बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को हायर करके उनको रीस्ट्रक्चर करवा रही है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज पड़ी हुई हैं सेम सेक्टर की। आप कोई जो इसका पी पहले से इतना हाई है क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि वो भागता है। भागता है तो गिरेगा भी भाई। जगन्नाथ भाई, ये मेरा सजेशन है, बाकी आप। आर यू पुलिस मैन? वेट, लेट मी सी whom I am talking. Oh man, are you policeman Jagannath bhai? Okay, great. First time, like I had never met anyone in my 2 years of YouTube, like any policeman. भाई ऑप्शन सेलिंग नहीं आता मेरे को, नहीं। आपको यदि बहुत अच्छे से आता है, आप फूडू आदमी हो, आप बहुत अच्छा करते हो तो आप करो। आई डोंट रेकमेंड। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। मेरे को सब लगता है कि ऑपरेटर का गेम चलता है। ये मेरा फीलिंग है। ओके, कोई इतने सारे चार्ट्स हैं, कौन सा पैटर्न देखते बैठेंगे? सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको यदि इमीडिएट पैसे की ज़रूरत नहीं है, और आराम से बैठिए। Bro, there is a reason foreign institutions are selling since last 5 year. I don't agree with 5 year. Okay.
A lot of foreign investment came after COVID. Okay, have you noticed it is the global capital moving towards China in the next big opportunity? See, most of the investors, nobody wants, what my feeling is, nobody like deny that China is not doing, but what I'm feeling, they are already in some matured state. Okay, they can't progress. Their companies can't give that much return what India can do. China is not taking now small ticket business work. छोटा छोटा अब नहीं काम करती, पहले छोड़ बना रहे थे, अब बड़ा टिकट आइटम पे देख रही, जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, और वो सारे छोटे टिकट इंडिया में मूव हो रहे हैं. इंडिया कैन स्टिल, आई फील, जितना मैंने देखा, जैसे फ्लोरिन के बिजनेस बंद कर रही हो, अपने नवीन फ्लोरिन और ये सब देख रहे हो कि बहुत तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया से कॉम्पिटिट ही नहीं कर पा रहे. इंडिया में अब पर कैपिटा मतलब लेबर्स का अभी भी बहुत कम है, कॉस्ट लेबर का. वहाँ पे जीडीपी रेज हुआ, उनका लेबर कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड अलॉट. अब छोटे मार्जिन वाले पे वो 10 साल पहले जो चाइना 25,000 सैलरी दे के बनवा रहा था, अब नहीं बनवा पाएगा. अब 1.5 लाख रुपए उनको सैलरी देनी पड़ती है. ओके, तो मेरे को नहीं लगता वो कर सकता है. दे आर कैपिटलिस्ट, लाइक कम्युनिस्ट नेशन है, लॉट ऑफ कैपिटल्स आर देयर, कैपिटलिस्ट है, वो कुछ कर सकते हैं, बट आई स्टिल फील इंडिया विल डू बेटर देन दैट. No political opinion I'm providing, but yeah, that's my feeling, man. I'm firefighter. Love you, man. Thanks a lot for saving lot of life, lot of people. Let me know if you need any help, जगन्नाथ भाई. कैसे भी करके मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ तो. एवरेज आउट, उदय सिंह. Akashpuri, this is good point, bro. Very useful. There are a lot of other things in microeconomics. If you see now, things are not. They are not democratic nation. Things you are not see, like you will not get to know only what is happening. The amount of money they are giving, lending, providing to other, so it can rotate into their economy. Why they are going and expanding it out? I visited multiple countries. Okay, I've seen in Africa, जहाँ पे भी लोन देके they are getting all this now. These countries are also like, जहाँ सबका मिनरल ले ले रहे हैं, रोड बना रहे हैं, वहाँ पे फ्री में रोड बनाते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, फिर उनके कोल रिफाइनरीज पूरे अफ्रीका पे कब्जा कर रखा है. I'll tell you. Okay, but people are realizing now. People, especially in African nations, in this 3 4 years, what change I have seen, they are realizing that these people are of no use, especially these countries. They are very much inclined towards India. You see their data for how much, what is the change into the purchase value of the things from India in last 3 or 4 years. You will know where they are tending to. That's why I'm telling India looks more favorable than China. Just it's a matter of time, guys. You see the FI will come. The when the dollar, like rupees, will become little bit strong, you will see FI is flying here. Don't worry. Some good quarter results. That's it. I possible can see your wish list. Don't see my wish list. I keep on updating. I don't know what it is there. You will take it as some recommendation. Don't. I don't want to. Okay, let's see. But I don't buy. Okay, see this Asha Pure. We did it, analyzed it 2 days before. Okay,
We predicted that it will go. I think 2 days before video you can see. I think I would be having some query as well. Mm, let me see. Valued, not in this. We found this stock also, Ashapura. It's good. This company is good. What is there into my wish list? This Ashapure Mindcam. Go and read about it. It is good. Camlin Fine Sciences. This also we found. Okay, it is also good. Um, Oswald Pump also, and Guatis and Rashi Peripherals. Okay, I purchased couple of days before. I think this stock I sold it because it was not moving for me, and I found some better opportunity at other place, so I sold it. But yeah, it was good. See, today it made 12%. So it's all about you. Like sometimes you hold it for a longer time, and later on you realize that after selling it, have moved for longer. Uh, उदय सिंह भाई कोचिंग शिपयार्ड शेयर 21 पे 55. Let me see here, man. Let me 1 second. Let me open coaching shipyard. Just 2 minutes, guy. Uday, just 1 second. I'm opening in my laptop so I can see. In phone, it's very small. Just 1 second. Coaching shipyard. Okay, so Uday, what I'm seeing, RSI is 33. Looks like approaching oversold. तो थोड़ा वेट कर लो. यदि आपको एवरेज आउट करना है, सो यू कैन डू एवरेज आउट ऑल्सो, मैन. ओके, बट फंडामेंटली इट लुक्स गुड. पी हायर है, ठीक है. लेकिन उसका प्रीमियम बनता भी है. कोचिन शिपयार्ड का अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करती है. ओके, ट्रेडिंग बुक वैल्यू भी बहुत हाई है. इसका नेगेटिव कैश फ्लो है. ये थोड़ा डरावना चीज़ है. वो अच्छा नहीं लग रहा. नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है इसमें. इसका रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट यदि देखेंगे आप तो, और सेल्स ग्रोथ भी इतना कुछ है नहीं. लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा है इसके. फाइनेंशियल उठा के देखिए आप, उसके लाइबिलिटीज़ कितने ज़्यादा हो रहा है. ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करिए, मैं बोलूँ. आप जितना है उतना ठीक है. थोड़ा एवरेज आउट करना है. आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं तो रख लीजिए, लेकिन यू कैन सेल इट आउट. उदय, इफ़ यू कैन बेयर द लॉस, it's like 500 rupees per share. How much it will be? Near about 25,000 rupees, right? So it's a huge amount. उदय, आप कर सकते हैं तो थोड़ा एवरेज आउट कर लीजिए. बजट तक का वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए. मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगा. बजट में ये सब भागते हैं. उस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो निकल लेना भाई. Let Trump pressurize as much he can. He also have to prove his people. You saw the result of New York election, right? And don't worry about it. We will be in better shape in after some days, once this European free trade things will start floating into it by March or by financial year 2026 and 27. So
आई एम पॉजिटिव. भाई वेयर आर यू फ्रॉम दिल्ली? जगन्नाथ भाई, आई एम फ्रॉम दिल्ली. 38 का लॉस, 38,000 लॉस. भाई यार, 38,000 का लॉस है. आप एवरेज आउट कर सकते हो उदय. आपके पास कुछ है, मतलब आप खरीद सकते हैं और थोड़ा एवरेज आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको पुल मिलेगा. अम, जब ये इलेक्शन के पास आएंगे आपको मार्च, फेब मार्च में थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा. तो उस वक्त आप निकल सकते हैं. क्या बताऊं मैं यार, मतलब थोड़ा प्रीमियम में है ये सब. न्यूज़ बेसिस है यार. अभी दो तीन प्रोजेक्ट मिल जाएगा, चलने लगेगा. वैसे नेवी इज़ डूइंग गुड. लेकिन आप थोड़ा बजट के पास निकल सकते हैं. थोड़ा अभी एवरेज आउट करके बजट के पास निकल लीजिए, मैं बोलूँ तो. एनालाइज मल्टीपल थिंग्स. पी, ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, if it is a private company, promoter holding, FI holding, DI, ROC, PB ratio, intrinsic value, sales growth from last 3 years, and operating profit margin growth. And my thing is operating, मतलब प्रॉफिट मार्जिन शुड बी मोर देन 10%, तभी मैं इन्वेस्ट करता. अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी में. How to use screener in proper, probably can you explain it if possible? We will do a screener session. I did couple of them. Not today. And Vinod, we can do some other day, man. If it is okay. यदि सही लगता है थोड़े दिन बात कर लेंगे अपन, चलेगा आपको? Can you suggest one sector for next rally? Our banks are the next faster bet. Banks are in good shape with this repo rate cut or all these things. They are in good shape. If the economy will move, okay, consumptions will increase, and banks are going to get more money, like benefit out of it. If economy will slow down, bank will come down. But yeah, timing in short term, if you'll ask, yes, it looks good. It looks attractive. We can buy them based on your like analysis, whatever you will do. Based on that, you can buy. But yeah, in short term, it looks good. But yeah, for longer term, on that all depends on the how things are changing around, because nowadays things change very fast. Today something is different, tomorrow something new policy will come from somewhere, it will become a totally different one. Yeah, but banks looks good to me presently by valuation, by the revenue, by the NPA. Everyone is like improving a lot into their NPA, and RBI is pushing now. The finance minister have told she they need a big banks, so definitely they are going to merge a lot of PSU banks into one big. Looks like some big names will be retained, and all these smaller PSU banks or government banks will merge to one single. Like they will form two or three. They will just keep two or three only. So the operating profit can be increased. The number of like software cost, like expenses to the company will be saved, and they will that will increase their profitability. So by what Sitaraman, like our finance minister is telling, and looks like bank is going to rally, and some new like big banks will emerge. तो यदि छोटे कोई बैंक का है और वो बड़े में इमर्ज होता है तो उसका शेयर और वो सब का कैसे हो रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन सी. वो जैसे अनाउंसमेंट होगा सब रैली मारेंगे. बट हाँ, अच्छा लगता है, अभी अच्छा लग रहा है.
सर मैंने सैजिलिटी का 5,000 शेयर. It's a good company. Sagility, we did it. It's good. You have good knowledge how long it took. What I do for living? I'm a cyber security personnel. Okay, in a multinational company in US. So I work there. So my shift hours is like I work for US. So I started early because I covered some other part of world as well. So I start from that time until 10 p.m. And that is how I earn my breads. Got it. Thanks for the information. भाई can you post good entry level stocks? अरे नहीं करता मैं यार, मेरा फिर से चैनल बंद हो जाएगा. विनोद भाई प्लीज़ समझा करो आप. पहले ही एक बंद हो गया. आई बिल्ट इट वेरी लाइक विथ लॉट ऑफ पेशेंस एफर्ट. मैं चाहता हूँ टू ग्रो. फिर वो आके उधर बंद हो जाता है यार, अच्छा नहीं लगता है. स्ट्राइक करके फिर वो यूट्यूब बंद कर देता है उसको. We can connect in some other places, but yeah, I can't recommend you. But क्या करते वो लोग nowadays they listen also, and something if it is they like you suggested some stocks to the name of the stocks and suggested to buy ऐसे words पता नहीं क्या है. They maybe and they are reading or based on some data modeling they are trying to search with these keywords into all live session and they are blocking it. I'm not sure, but yeah, they do run some algorithm looks like, and they figure out, and next day you will get an email from them. देखो रोहित राज भाई को समझ में आ गया. I think Rohit, we met it right before in some sessions. Looks like your name is familiar to me. Sorry. गाइस पहले सब लोग लाइक कर लो यार. इतनी देर पिछले कितने घंटे हो गए, 2.5 घंटे. हाउ मेनी पीपल केम इन सेशन? लेट मी जस्ट 1 second guys. More than 700 people and likes 11 likes. क्या बात है यार. More than 700 people join and I have like 10 likes, huh? What is the ratio? Please like and subscribe guys. Let's grow this channel. I don't want to recommend anything that this will also go in vain, all the hard work. So we'll discuss in some other forum. We have a lot of other options. भाई सेफ्टी फर्स्ट, सही बोल रहे हो भाई उधर भाई. सेफ्टी फर्स्ट. That's true. It's the same name, Vinod bhai. It's same name on Insta. It will be there in my YouTube channel list. And guys, please like it. Let's do something. One trader. Hi, sir. One trader. Sure, Vinod. भाई लाइक कर लो पहले तो यार, एटलीस्ट जितने देख रहे हैं अभी तो. उस वक्त कितने थे? 180. अभी 22 लाइक्स तो कर लो पहले, फिर अपन बात करते कुछ. इतने सारे 700-800 लोग आए, लाइक नहीं किया. थिंक दे डोंट सब्सक्राइब. इंटरेस्टिंग. प्लीज सब्सक्राइब एज वेल गाइज प्लीज. So we can have this discussion forward, going forward as well. Do subscribe. By how did you learn such a good investment strategies? How long it? भाई मैंने खुद से सीखा. मैंने आज शायद एट द स्टार्टिंग भी किसी को बोला था कि खुद से सीखो, ज़्यादा फेलियर से ही सीखोगे. मैंने ये देख रहे हो, मेरा ये ग्राफ दिखाता हूँ. मैंने कुछ नहीं कमाया 2-3 साल, बस पढ़ाई है 2-3 साल. कुछ नहीं कमाया. कितना 8-10 लाख लगा के तो कुछ नहीं कर रहा था मैं उस वक्त. बस मैं मॉनिटर कर रहा था कौन सा क्या होता है, कैसे रोटेट होता है, क्यों होता है, क्यों खरीद रहे हैं, किस बेसिस पे खरीद लिया इस म्यूचुअल फंड ने. सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड देखते रहो यार. क्यों खरीद रहे हैं
उसका फिर रिपोर्ट पढ़ो, देखो क्या अच्छा आया था कि म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया। दे आर एक्सपर्ट्स, आज से नहीं, वो सदियों से बैठे हुए हैं, वो सब यही कर रहे हैं। उनके पास बड़ी टीम है। देखो वो किस क्या चीज़ पढ़ के वो लोग कर रहे हैं जो हमें नहीं मालूम। इनसाइडर वाला तो छोड़ दो, ऐसा उनको भी नहीं होगा, भगवान जाने मालूम होगा कि नहीं, लेकिन देखो उनको क्या समझ में आ रहा है कि वो लोग खरीद रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पे देखो हम खरीद सकते हैं क्या, हमें समझ में आ रहा है क्या। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है, ये गेम क्या चल रहा है। और कभी बहुत बार मैं भी गलत हूँ यार, मेरे भी 8-10 स्टॉक अभी भी नेगेटिव है, लेकिन मैं धीरे धीरे, मैं एकदम से नहीं खरीदता, तो वो भी धीरे धीरे करके है। भाई उदय सिंह, आपका कूल करके है क्या इंस्टा पे? कितने 87 इंस्टाग्राम पे वो आया है मेरे को। अभी कौन सा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो अप, कूल 1224। Yes, and just I will take a 1 minute break. I'll bring some water and sorry, I was away from my speaker. Just give me 1 minute. I'll bring some water and then we'll connect again. Meanwhile, you can post your questions if you have. आप क्वेश्चन डाल दीजिए। थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब कर लो यार। अभी भी कितने 30 40 लोग हैं, 14 लाइक्स भी हैं, देखो बहुत सही, 40 + 14 है। मीनवाइल आई एम ब्रिंगिंग व्हाट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। I'll be back in 5 minutes.
Hi guys, I'm back. अरे अभी भी 14 लाइक ही है. जब गया था मैं 14 लाइक ही था. And that time 60 40 people 50 people were there. अभी भी 14 लाइक्स ही है. गैस डबल टैप कर दो बस, उतना ही चाहिए और कुछ नहीं. How to select undervalued stock with high potential? And there are some queries, Niranjan. Can you please tell me which mutual fund to watch for and where to get the data to read about? बहुत सारी साइट है. You can compare it multiple mutual funds and grow also. They have a facility where you can do. Also, please tell a screener session detail. I don't rename it, but I can show you guys. So Neeraj के लिए और स्नेहा के लिए. Sorry guys, I'll take 2 minutes. But I'll show some screener. Okay, so for example, this I try to find some undervalued stock. Okay, not undervalued. This is like based on the growth. Okay, so if you have to follow like undervalued stocks, okay, you can put some more queries there. Okay, so for example, sales growth, and I want to write and like intrinsic intrinsic value should be less than should be sorry, it should be greater than current price. Okay, if I execute this, for example, these are the share which is coming. So all these shares means having, or if I do market capitalization, I will increase it like this. Okay, and sales growth and intrinsic values. So a new VLS international got added. So if this got added here, if you'll see, market capitalization is 13, the current price is 321, and what is the intrinsic value is 337. Okay, so still it's down. Promoter holding is more than 70%. Okay, but you have to see other factors as well. Okay, like the P value. You see the P with compared to other. Okay, dividend, those things are okay. You have to see return ROCE. Okay, whether the sales are increasing, the operating profit margin also. So if we see operating profit margin, OPM, for this company, it's increasing. OPM, okay, it was 31, 25, 29, 29. In some days maybe you will see this BLS international is going up. Okay, because it looks good to me. OPM has reduced from 30%, and now TTM it is giving 28. So just keep a eye. But from 21 to 30 it went recently. Okay, so it can give you good returns. And there are other things. Cash from operation activity, it is increasing. It's okay. For investing activity, it is negative. Financial activity, it has increased. That is okay. Debitor days, okay, that is also less. 52 from 76, 8, 9, 20. It is not better than 2023. Okay, cash conversion day is also not better than 2023, but promoter is constant there. FI is also having some hold. DI is purchasing. Public have reduced. Other have also. So you have to just see which in which domain it falls, and based on that you have to do some more analysis on that. So you can write your own query like return on equity if don't, but I need higher ROE stocks, so I used to put like return on equity should be more than 30, and sales growth every year, the sales growth, or you can put something called as here year on year quarterly sales growth as more than 30. And then see, these companies are now, one more company came called as Vigor Plast. Okay, this is also falling in the criteria. Current value is 80. Intrinsic value means actual value is 115.
Number of equity shares are very less in the market, is 1.04 crore only. Okay, and promoter, I think it's a recently launched company or what? Yeah, it launched in the month of September. Vigor Plast. Okay, FI is having holding, so there is no much data available. So in that case, I don't invest in such company. I need at least three financial quarter result to analyze the data. So I'll wait for, like, I will not start investing into this. I'll keep on waiting for some more time and see how quarter by quarter it is like progressing. Okay, and based on that I'll do. So there are multiple queries which I have published it publicly as well, based on the request from multiple people. So if you require something, I can build it, and I can show you also how to build the queries. uh, you need some small knowledge only. I think you all can do it. Hope it's helpful. I know it was very quick one, but just considering the time I did it. Sneha, Niranjan. Yeah, thanks. Okay. Okay, guys, it's 1 o'clock. We'll meet again. Thanks a lot for joining the session. Okay, and if you like the things, uh, please subscribe. Hope it cross 1 CR in this year, and I have already crossed, man. I have a target of 2 CR. My portfolio in like stocks is near 90, and in mutual fund it is 53 lakhs. So I'm almost near about how much it will be, 143, 143.45. So I need to make it 2 CR by this year. That's my target. So let's see. By this financial year, I'm targeting to make it 2 CR. How it goes? I recently, like as I mentioned, I started. I was not investing for one and a half year. If you'll see, like from last 2 months, when I started my channel again, I'm investing heavily. I'm positive, like I'm thinking that market will go up from here. उदय सिंह भाई, आप दिल्ली में रहते हो तो नोएडा में नियर जेवर पोर्ट। भाई जेवर पोर्ट के पास सब कुछ किसानों से लेके बिल्डर्स ने पहले ही खरीद लिया है। ओके, अब वो बिल्डर इतने महंगे में दे रहे हैं कि आप कुछ नहीं खरीद पाएंगे इस पैसे में। एंड यू डोंट रिक्वायर सो मच प्रॉपर्टी इन योर लाइफ यार। फैक्ट इज दैट you need to have a peaceful life and something for your future, for your retirement. आप लोग तो बहुत यंग होंगे, आई एम ओल्ड चैप। सिल्वेस्टर, हाय। हाय सिल्वेस्टर। गुड नाइट सर, गुड नाइट, एंड थैंक यू सर। जगन्नाथ सर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। guys, please like it. Let's, हाय सर, गुड नाइट सर। सिल्वेस्टर, पहले अपन मिले क्या? हम बहुत मीन्स अ लॉट, थैंक यू। अरे थैंक यू सर आपका आने का। guys, whoever is seeing, please like it. Let's make it 30 at least, then we'll go quickly. Let's do it. 16, 17. Oh no, it's not increasing. Okay, please subscribe it guys. Okay, and let's connect once again. Thanks a lot everyone for joining. Thank you.